Hello students, welcome you all on behalf of Resonance, myself Srinivas Naidu, SRN sir. आज हम 29 जून 2022 की शिफ्ट 1 पेपर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें when white phosphorus react with concentrated NaOH solution, a sodium salt is formed. The anion salt contain 2 pH bonds and the acid of that anion is. So, इसमें when white phosphorus concentrated NaOH से react हो गया तो तब सोडियम हाइपोफॉस्फेट बनेगा और इसके एनायन दैट इज H2PO2 माइनस है और ये H2PO2 माइनस की एसिड दैट इज H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसको हम कहेंगे फॉस्फोनिक एसिड। H3PO2 को हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलेंगे। सो आंसर फॉस्फोनिक एसिड। एंड यहाँ फॉस्फोनिक एसिड इज phosphorus acid H3PO3 and phosphonic acid means hypophosphorus acid and pyrophosphoric acid is H4P2O7 and metaphosphoric acid is HPO3. So इसमें H3PO2 के बारे में पूछा है। So ये सोडियम सॉल्ट के एनायन की रिलेटेड एसिड है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एक्टिवेशन एनर्जी chemical kinetics. The activation energy of a first order reaction is given at different temperatures, that is 300 and 310 Kelvin. इनके रेट कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन दिया है और ये रिलेशन x इंटू 10⁻³ इंटू K310 ये रिलेशन है। अब इसमें हमको फाइंड करना है x वैल्यू कितना होगा। अब इसमें आप जानते हैं ln K2/K1 इक्वल टू E/R 1/T1 माइनस 1/T2 और इसमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को जूल्स में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इट इज 5,32,611. इट इज ऑलरेडी गिवन एंड R वैल्यू इज ऑल्सो प्रोवाइडेड एज 8.3 and this temperatures also given T1 T2 values and on substituting you will get 6.9 as this ratio ln K310 upon K300, that means at 300 Kelvin and at 310 Kelvin, and these are the rate constants at these temperatures. Now it is written as 2.3 into 3 and we can write it as 3 into ln 10. Now if you compare this, you can take K310/300 equal to 10 cube and K300 equal to 1 into 10⁻³ into K310 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें ये x वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि हमको ये रिलेशन में ये x वैल्यू दिया है। ये x वैल्यू क्या होगा? ये x वैल्यू होगा 1। और थर्ड क्वेश्चन, this question is from surface chemistry. Which of the following is true regarding colloidal solution? The first option given is Brownian movement destabilize the colloidal solution. ये गलत है। Brownian movement is responsible for stability of colloidal solution. Next, opposite charge sol when mixed neutralize the charge, stable the colloidal solution. ये भी गलत है। जब अपोजिट चार्ज ऐड करेंगे तब ये कोएगुलेशन और एग्रीगेशन हो जाएगी, तब ये कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्टेबलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट, सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल मेक्स द सोल स्टेबल. यस, इट इज करेक्ट बिकॉज व्हेन सिमिलर चार्ज और इक्वल चार्जेस आर present on colloidal soul, then there will be repulsions and these repulsive forces are responsible for the stability of this colloidal solution. So the correct answer is third one. Fourth question, in the following reaction sequence FeCr2O4 KOH gives A and in presence of
acid hydrolysis, it will give B. Find number of terminal oxygen atoms in the product B. This is the reaction of preparation of potassium dichromate. Okay. And in the potassium dichromate preparation, FeCr2O4 when treated with KOH and oxygen, it will give K2CrO4 potassium chromate. This on hydrolysis in presence of acid, it will give K2Cr2O7, and this is the B product and this is the A product. And in the B product, they asked about the number of terminal oxygens. That means in Cr2O7 2 minus, the number of terminal oxygens are 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Next, it is also very easy question from thermodynamics. Enthalpy of vaporization of 17 grams of ammonia is 23.4 kilojoule. Then find the enthalpy of vaporization of 85 grams of ammonia. Here enthalpy of vaporization of 17 grams of ammonia is 23.4 gram, it is given, and we have to calculate for 85 grams. If you calculate, it will be 117 kilojoule. Now, this is also easy question from mole concept, that is 4.64 kilogram Fe3O4 react with 2.52 kilogram carbon monoxide according to the following reaction. Then find the mass of iron formed in grams. Here in Fe3O4 and CO, if you divide with the molar mass, Fe3O4 molar mass is 232 and CO molar mass is 28, then you will get moles for this Fe3O4 and CO. अब इस मोल्स कितना आ गया, Fe3O4 का 20 और CO का 90 आएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो। अब ये दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। कैसे? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। सो ये 20/1 एंड ये 90/4। सो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करने से ये आ गया आपको 20, ये आ गया 20 पॉइंट, क्योंकि यहाँ तो आपको 20 से ऊपर ही आएगा। सो अब इन दोनों में जिसका ये डिवीजन वैल्यू कम आएगा वही हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। सो इन दोनों में आपको लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगी Fe3O4। ठीक है, सो ये लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने की तरीका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके हिसाब से आयरन की मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ 1 मोल लिया तो ये 3 मोल आयरन बन रहा है। अब ये 20 मोल्स लिया तो तब Fe कितने मोल बनेगा, 60 मोल बनेगा। सो ये 60 मोल किसकी है, ये 60 मोल, दिस इज Fe3O4 लिमिटिंग रिएजेंट है तो आयरन की मोल्स है 60। नाउ मास ऑफ आयरन कैलकुलेट करना है। सो मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगी, 60 इंटू 56 करेंगे, इट इज एटॉमिक मास ऑफ आयरन 60 मोल्स इंटू 56। नाउ यू विल गेट 3360 ग्राम ऑफ आयरन। Next question, this is from metallurgy. In the extraction of which metal cyanide is not used? That is, in the extraction of silver and gold, we can use sodium cyanide, that is, it forms a complex, and this on further treating with zinc, we will get silver and gold. This is MacArthur Forest process or cyanide process भी बोलते हैं। अब इसमें आपको दिया है कॉपर। कॉपर का हम कहाँ यूज करेंगे, ड्यूरिंग द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस ऑफ कॉपर पायराइड्स। कॉपर पायराइड्स में फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में ये लेड सल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड इम्प्योरिटीज होता है। तो ये इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए सोडियम साइनाइड को हम यूज करेंगे एज डिप्रेजेंट। सो इसमें भी ये सोडियम साइनाइड काम आ रहा है।
फिर किसके एक्सट्रैक्शन में काम नहीं आएगा सोडियम साइनाइड, दैट इज जिंक के एक्सट्रैक्शन में। तो इसलिए आंसर इज 1, दैट इज जिंक। इन विच सोल्यूशन AgCl हैज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। अब इसमें ऑब्जर्व कर लो Cl एंड Ag, ये AgCl में कॉमन आयन्स जिसमें हैं, कॉमन आयन के प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो 0.01 मोलार KCl दिया है, इसमें कॉमन आयन Cl माइनस, एंड 0.01 मोलार HCl दिया है, इसमें भी कॉमन आयन Cl माइनस, और 0.01 मोलार Ag दिया है, इसमें कॉमन आयन Ag प्लस। सो ये तीनों में कॉमन आयन्स है। सो कॉमन आयन की प्रेजेंस में इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, AgCl की सॉल्युबिलिटी कम होता है। और आयनाइज्ड वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं होता है, डी आयनाइज्ड वाटर। सो द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विल बी इन डी आयनाइज्ड वाटर। Next, another question from S block. This is flame color test की क्वेश्चन है। ऑलरेडी अपन को NCERT में एक टेबल बना के भी दिया है इसके फ्लेम कलर एंड वेवलेंथ, और इसमें मेटल्स, S ब्लॉक मेटल्स दिया है, वेवलेंथ ऑफ द कलर दिया है। अब इनको मैच करना है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं क्रिम्सन रेड के लिए ये लिथियम 670.8 नैनोमीटर्स होता है, और येलो के लिए 589.2 नैनोमीटर्स, एंड वायलेट और लिलैक कलर इज 766.5, रेड वायलेट 766.5, एंड इसमें ये ब्लू कलर, ये तो गलत छप गया, इसमें अलग होता है, और इसमें ये तीनों की मैचिंग आप यहाँ करेंगे। अब देखो लिथियम के लिए कितना होगा, लिथियम के लिए 670.8, और सोडियम के लिए तो मैं यहाँ बता दिया 589.2, एंड नेक्स्ट रुबिडियम के लिए हम देखेंगे, इसमें रुबिडियम के लिए इट विल बी 780 नैनोमीटर्स, एंड फॉर सीजियम इट इज 455.5 नैनोमीटर्स। अब इसमें आप कलर्स की बात करें तो ये कलर्स, ये रेड वायलेट एंड ब्लू कलर्स है, लेकिन यहाँ ये प्रिंटिंग एरर है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, दैट इज लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड दिया है। ये क्वेश्चन हम केमिकल बॉन्डिंग में फैजान्स रूल से बता सकते हैं, that is smaller the ion greater will be the covalent character। इसमें लिथियम, सोडियम, रुबिडियम एंड सीजियम में स्मॉलर आयन किसका है, लिथियम आयन का है। लिथियम से सीजियम तक साइज ऑफ द आयन इंक्रीजिंग, सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो from lithium chloride to cesium chloride, covalent character decreases. So answer is 1. Next, 0.55 gram of an organic compound containing nitrogen in Geldahl's method. It gives ammonia gas with which neutralizes completely by 12.5 milliliters and 1 molar H2SO4. Then find percentage of nitrogen इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जेल्डाल्स मेथड की प्रॉब्लम है, और इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है। हमको दिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनिया दे रहा है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास दिया है 0.55 ग्राम। अब इसमें अमोनिया को ये H2SO4 से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, देन वी आर गेटिंग अमोनियम सल्फेट। अब इसमें वैलेंस फैक्टर ऑफ अमोनिया इज 1, फॉर सल्फ्यूरिक एसिड वैलेंस फैक्टर इज 2। नाउ equivalents of ammonia equal to equivalents of H2SO4, law of equivalence हम अप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें 1 into number of moles of ammonia equal to 2 into number of moles of H2SO4 कैलकुलेट कर रहे हैं। अब इसमें 1 into 12.5 into 10 power minus 3 will give you the number of moles of H2SO4। अब इसमें number of moles of nitrogen equal to, ये तो अमोनिया है,
Our number of moles of nitrogen will be the same because 1 mole of ammonia will contain 1 mole of nitrogen. So, number of moles of ammonia will be equal to number of moles of nitrogen. Now, number of moles of nitrogen can be converted into weight by multiplying with its gram atomic mass. So, gram atomic mass of nitrogen is 14. So, if you multiply with 14, you will get weight of nitrogen gas. Next, from the weight of nitrogen gas and weight of organic compound, we are calculating percentage of nitrogen. That is, percentage of nitrogen equal to weight of nitrogen upon weight of organic compound into 100. Then you will get 63.636. If you round off, you will get 64%. This is the percentage of nitrogen in the given organic compound. Next one, this is a question from hydrogen peroxide properties. In which of the following reaction hydrogen peroxide acts as reducing agent? So, reducing agent का meaning क्या है? Which reduces the other substance and oxidizes itself is said to be the reducing agent. अब इसमें किसको reduce कर रहा है? देख लो इसमें MnO4 माइनस में Mn का +7 स्टेट है और MnO2 में इसका +4 स्टेट है. सो +7 से +4 को इसको reduce कर रहा है. ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है टू -1 से 0. -1 से 0 को ऑक्सीडाइज हो रहा है. दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम. नेक्स्ट, MnO4 माइनस. नेक्स्ट क्वेश्चन 13th. 1.2 milliliters of acetic acid with density 1.02 gram per milliliter when dissolved in 2 liters of water. Depression in freezing point observed is 0.0198 degrees Celsius. Then find the percentage of dissociation of acetic acid in this solution. अब ये क्वेश्चन तो सोल्यूशन कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज का है. अब इसमें हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन. अब इसमें दिया है आपको मास ऑफ एसिटिक एसिड. मास ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन एंड मास ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर रहे हैं अपन. डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर गिवन. सो डेंसिटी एंड वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ एसिटिक एसिड आएगा 1.224 ग्राम. एंड मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज, मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज मास अपॉन molar mass into solution solvent weight. And now delta TB equal to I into Kf into m, or I is the Van 't Hoff's factor. And first we are going to calculate I by using this relation. अब इसमें I calculate कर रहे हैं. Kf value provided, delta TB value is given and molality we calculated here. So, by substituting this I value you are getting 1.0493. अब इसमें I इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा एंड 1.0493 इक्वल टू 1 प्लस 2 - 1 इंटू अल्फा बिकॉज एसिटिक एसिड dissociates as acetate ion and H plus ion. Now, alpha equal to, if you calculate this you will get 0.0493 and percentage of alpha पूछा है, that is percentage of dissociation, that will be equal to 4.93 or rounded off to 5. Now, this is the question from electrochemistry. 0.1 ampere current is passed for 2 hours through dilute H2SO4 solution. Then find total volume of the gases produced as electrodes during 8 electrodes during electrolysis at NTP, and given volume of 1 mole of ideal gas at NTP is 22.7 लीटर्स लेना है. अब देखो H2SO4 में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डाइल्यूट H2SO4 को, देन एट एनोड एंड एट कैथोड वाटर will oxidize and water will reduce. At anode, if water oxidizes, it will give oxygen, and at cathode, if water reduces, it will give hydrogen. Now, overall reaction, the water
on electrolysis, acidified water on electrolysis, it is giving 2H2 plus O2. अब इसमें आप देख सकते हैं 4 इलेक्ट्रॉन की चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें 4 फैराडेज चार्ज प्रोड्यूस्ड इज गिविंग 3 मोल्स ऑफ गैस, ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें पहले हम चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं, 0.1 एम्पियर करंट दिया है और 2 आवर्स पास कर रहे हैं। सो इफ यू कैलकुलेट इट इज इक्वल टू 720 कूलम्स, और ये 720 कूलम्स के चार्ज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, दैट इज फैराडेज में कन्वर्ट करेंगे तो 720 अपॉन 96,500 फैराडेज इज प्रोड्यूसिंग हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस। ये कैलकुलेट किया तो यू आर गेटिंग 3 into 18 by 9,650 मोल्स एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट NTP कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ तो मोल्स पता है, अब वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमको दिया है 1 मोल ऑफ द गैस इज 1 mole gas volume is equal to 22.7 liters at NTP. So it is multiplied with 22.7, then you will get 0.127 liters. Now in milliliters it is equal to 127 milliliters. So the answer is 127. Now the another question, correct electronic configuration of platinum, atomic number 78. It is very easy question and xenon 54 and इसमें निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये तीनों के लिए, ये 8th ग्रुप में ये तीनों के लिए कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होता है। बाकी सभी एलिमेंट्स में सेम ग्रुप एलिमेंट्स विल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट एक्सेप्ट दिस, इसमें 3D8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन होगा निकेल के आउटर कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम 4D10 5s0 एंड प्लैटिनम 5D9 6s1 configuration, 5D9 6s1 configuration. Particularly for this group, the 3 elements are having different electronic configuration. So the electronic configuration of platinum is xenon 4f14 5d9 6s1. Next, MnO4 2- disproportionate in acidic medium, then find magnetic moment in higher oxidation state product. So इसमें MnO4 2- का ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 और MnO4- का ऑक्सीडेशन स्टेट +7, इसमें Mn के ऑक्सीडेशन स्टेट, MnO2 में इसका +4। ये MnO4 2- is disproportionating in acid medium like this. अब इसमें प्रोडक्ट में हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले Mn की स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। सो ये हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन है, MnO4-, पोटेशियम परमांगनेट आयन, इसमें Mn is in +7 state, Mn if is in +7 state, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3D0। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा 0, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 0 है तो तब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 होगा। आप स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, √n × n+2 bm, ये फार्मूला यूज करते हैं। इसमें n वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। Now this is a question from atomic structure. Which of the following set of statement is correct? First one, magnetic number can have negative value. Yes, magnetic number can be negative value because magnetic quantum number have -L to 0, 0 to +L. Next, in ground state, electrons are always filled according to increasing order of energy of orbitals. Yes, increasing order of energy of orbitals, we are filling the electrons. That is Aufbau's principle only. Now, total number of nodes are n-2. This is wrong because इसमें angular nodes will be equal to L के बराबर होगा,
radial nodes will be n minus L minus 1, n minus L minus 1. If you calculate the total nodes will be equal to n minus L के बराबर होगा, sorry n minus 1 के बराबर होगा. So, it is not n minus 2, it is n minus 2, n minus 1. Now, electronic configuration of chromium is argon 3d54s1, yes, it is correct. So, the correct option is A, B and D statements are correct. So, first one is the correct option. Now, this is the question from gaseous state. An ideal gas density is given 0.121 gram per milliliter at 257 degrees Celsius. Temperature have pressure of 100 millimeters of Hg. Then find molar mass of gas. अब इसमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे. Pm equal to dRT. M is molar mass, P is pressure, D is density of the gas and T is temperature. And on substituting we are calculating the molar mass. This is direct substitution formula based question, and if you round off this you will get 40. So, this is the molar mass of the given ideal gas. Okay students, in this session we got only 18 questions and I hope you enjoyed. Thank you.